So let's start now. Survey, you start from extension. अब तक हम लोग क्या देखे कि फेब्रेज क्या हो गया था, अब तक फेलियर हो चुका था, राइट? रिसर्च शुरू हुआ कि क्यों फेलियर है। इस पैराग्राफ तक हम लोग क्या देखे? मनीष, इस पैराग्राफ तक हम लोग क्या देखे? नो आइडिया। फेब्रेज के इन्वेंशन के बाद इन लोगों ने सोचा कि फेब्रेज मतलब मार्केट में अब राज करेगा, इस टाइप सा था। ठीक है, एक डेली रूटीन में ये शामिल हो जाएगा। फाइन। अब यहाँ देखिए, स्टिम्सन एंड हिज टीम वेंट बैक टू प्रॉक्टर एंड गैम्बल। फिर क्या होता है आगे देखिए यहाँ पे। Let's start, Surbi. Stimson and his team went back to PNG headquarters and started reviewing the marketing campaign they were about to roll out. The key to selling fabrics, they decided, was covering that sense of relief, Conveying that conveying that sense of relief the park ranger felt. They had to position fabrics at something that would allow people to rid themselves of embarrassing smells. All of them were familiar with Claude Hopkins' rules on the modern incarnation. incarnations that filled business school textbooks. They wanted to keep the ads simple, find an obvious cue, and clearly define the reward. They designed two television. यहाँ तक के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना टीवी कॉमर्शियल मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों तक ये पहुंचाया जाए। ठीक है, कि ये फेब्रिक्स का क्या काम है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि सिंपल ही रखेंगे हम लोग, एक तो नॉर्मल क्यू, मतलब क्या ट्रिगर है, क्या संकेत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर रिवॉर्ड क्या है उसका। लाइक फेब्रिक्स के केस में क्या क्यू हो सकता है? बैड स्मेल, एम्बैरेसिंग स्मेल, और उसके बाद फेब्रिक्स यूज करिए तो फिर ये आपका प्लेजेंट स्मेल आपके रूम में रहेगा, दैट इज योर रिवॉर्ड। तो स्टिम्सन चाहते थे, ये हॉपकिन के रूल पे स्टिक करना चाहते थे कि सिंपल आप क्यू और रिवॉर्ड के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट आप मतलब पब्लिश करिए या टीवी कॉमर्शियल दीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है टीवी कॉमर्शियल। They designed two television commercials. The first showed a woman talking about the smoking section of a restaurant. Whenever she eats there, her jacket smells like smoke. A friend tells her if she uses Febreze, it will eliminate the odor. The cue, the smell of cigarettes. The reward, odor eliminated from clothes. The second ad featured a woman worrying about her dog, Sophie, who always sits on the couch. Sophie will always smell like smoke. A friend tells her if she uses Febreze, it will eliminate the odor. Dog Sophie, who always sits on the couch. Sophie will always smell like Sophie. She says, but with Febreze, now my furniture does not have to. The cue, pet smells which are familiar to the 70 million households with animals. The reward, a house that doesn't smell like a kennel. Stimson and his यहाँ तक क्या देखिए, दो टीवी कॉमर्शियल था। एक था कि वहाँ क्यों क्या था, स्मोकी सेक्शन ऑफ रेस्टोरेंट में एक वुमेन बैठती थी और जब घर आती थी उसका जैकेट स्मेल करता था लाइक स्मोक, सिगरेट की स्मोक की तरह। तो कॉमर्शियल में दिखाया गया कि एक क्यू होगा, द स्मेल ऑफ सिगरेट, यानी ये प्रॉब्लम है आपका, और रिवॉर्ड, फेब्रिज यूज करने के बाद रिवॉर्ड खत्म हो गया, सॉरी आपका ऑर्डर जो है वो खत्म हो गया। सेम वे सेकंड कॉमर्शियल में क्या बताया गया है, ये पेट का प्रॉब्लम अगर है, पेट जिसके घर में होता है वो काफी स्टिंकी होता है, काफी स्मेल करता है। तो अगर अगेन आप फेब्रिज यूज करें तो आपका जो फर्नीचर है या कहीं बेड वगैरह है कुछ भी आपका स्मेल नहीं करेगा। यहाँ बेसिकली फर्नीचर का डिस्कशन हुआ है, तो वो स्मेल नहीं करेगा, जस्ट यूज फेब्रिज। ठीक है, आगे चलिए। कैनल, ये जो वर्ड है ना, कैनल जहाँ पे पेट्स को रखा जाता है, फाइन, उसको कैनल बोल रहे हैं। आगे चलिए। Stimson and his colleagues began airing the advertisements in 1996 in the same test city. Airing है क्या? Airing. एयरिंग, एयरिंग द एडवर्टीजमेंट मतलब पूरे तरीके से फैलाना शुरू किया।
ये 2 कॉमर्शियल बनाया, उसके बाद अच्छे से फैलाना शुरू किया, एयरिंग द एडवर्टीजमेंट। अंडरस्टूड? आप लोग वोकैब लिख रहे हैं ना? आर यू राइटिंग दीज ऑल वर्ड्स और नॉट? हाँ या ना बोलना होता है। हाँ, लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? या तो हाँ में आंसर होगा या तो ना में आंसर होगा। नो मैम। कोई नहीं लिख रहे? नो मैम। कब से लिखेंगे? अभी से। इससे पहले भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, या नहीं तो जिसके पास ऑलरेडी बुक है वो उसमें भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब बुक खत्म हो जाएगा काफी अच्छा आपका कलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा टफ वर्ड मैं अंडरलाइन करने को सजेस्ट नहीं करूंगी, जो आप रेगुलर वोकैब यूज कर सकते हैं, रेगुलर मतलब डेली आप कुछ ना कुछ इस टाइप का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी कॉमन जनरल वर्ड, आप उसको अंडरलाइन करके रखिए। चलिए, दे गिव अवे। They gave away samples, put advertisements in mailboxes, and paid grocers to build mountains of fabrics near cash registers. Then they sat back, anticipating how they would spend their bonuses. A week passed, then two, a month, 2 months. Sales started small and got smaller. Panicked. The company sent researchers into stores to see what was happening. Sales were filled with fabrics bottles that had never been touched. They started visiting housewives who had received free samples. Oh ओके, yes, पॉज। one of पॉज श्रुति, यहाँ तक क्या समझ में आया? सॉरी सुरभि, क्या समझ में आया? मैम की क्या बोलते हैं, वीक पास हो गया, 1 महीना 2 महीना पास हो गया, लेकिन वो उतना बिक नहीं रहा था। सेल्स पूरा भरा हुआ था बट करेक्ट। कोई ले नहीं रहा। एंटिसिपेशन तो बहुत अच्छा था कि हाँ बहुत बिकेगा, सारे लोग खरीदेंगे, सब लोग पसंद कर रहे थे। जितना ऊपर सब जो कुछ कुछ टेस्ट किया गया, सब लोग लाइक किए फेब्रिक्स को, लेकिन एक्चुअल में पता है बोनस तक प्लान कर लिए थे कि कैसे बोनस स्पेंड करेंगे। लेकिन जब रियलिटी की बात आई, जब एक वीक पास हो गया, फिर 2 वीक पास हुआ, फिर मंथ पास हुआ, 2 मंथ पास हुआ, उसके बाद देखा जा रहा था कि वो फेब्रिक्स जो है बिक ही नहीं रहा था। ठीक है, जो स्टोर है वो पूरा सेल्फ फेब्रिक्स के बॉटल से भरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या क्या करना शुरू किए, जो हाउसवाइफ है जिनको वो फ्री सैंपल दिए थे उनको आप विजिट करना शुरू किए। ठीक है, यानी जो एंटिसिपेटेड था वो हो नहीं रहा। अब आगे देखिए, आगे कोई और पढ़िए, रोहित पढ़िए। फेब्रिज मींस फेब्रिक्स प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे। अब इससे पहले का क्लास नहीं किए हैं क्या? नो मैम। फेब्रिक्स एक स्प्रे है जो आपका बैड ऑर्डर को एलिमिनेट करता है, खत्म करता है। ठीक है, जैसे पहले आप देख रहे थे पेप्सोडेंट प्रोडक्ट का डिस्कशन हो रहा था, वैसे एक यहाँ पे प्रोडक्ट है फेब्रिक्स, कैसे मार्केट में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है निशु? रोहित, यू आर देयर और नॉट? Yes, ma'am. Read from here. Oh yes, one of them told. Yeah. Oh yes, one of them told PG researchers the spray I remembered it P&G researcher, Procter and Gamble researcher. personal and Gamble researcher the spray I remember it. Let's see. The woman got down on her knees in the kitchen and started rooting through the cabinet underneath. Okay, this is again a good word. Started rooting through the cabinet. Underneath the sink. Write down these words. And ensure that आप sentence लिखे कि rooting through the cabinet लिखे, underneath the sink लिखे, ताकि एक बार आपको उसका uses पता चल जाएगा जैसे आप root through करें word पे। चलिए। I used it for a while, but then I forget about it. I think it back here somewhere. She stood up. Maybe it in the closet. She walked over and pushed aside some brooms. Yes, here it is in the back. See, it's still almost full. Did you want it back? ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो हाउसवाइफ के पास गया, जब ये लोग गए
ये देखने के लिए कि वो लोग का क्या था, फीडबैक क्या था, जो फ्री सैंपल जिनको दिया गया था, तो पता चला कि उन लोग को ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है, यानी वो रेगुलर यूज में नहीं ला रहे हैं उसको, ठीक है। इतना डिस्क्रिप्शन देने का क्या मतलब है, मतलब ऐसी जगह रखा हुआ है जहां मिल नहीं रहा है, ढूंढने पे पता चला अच्छा ये है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट ये फुल है, क्या ये आपको वापस चाहिए, इसका मतलब वो लोग फ्री सैंपल कहीं एक कोने में पड़ा हुआ था, ठीक है, दे वर नॉट यूजिंग इट। आगे चलिए। फिब्रिस Fabric वाज अ ड्यू, ये डूड मतलब, ये डूड वो डूड वाला डूड नहीं है, डूड मतलब कोई बताएंगे? फिब्रिस वाज अ डूड, रोहित बताइए। नहीं पता है। थोड़ा कनेक्ट भी करिए, जैसे ऊपर से हम लोग देख रहे हैं ना कि ये फेलियर है, तो सेम वे यहाँ पे डूड का यहाँ पे सेंस है, फिब्रिस वाज अ डूड मतलब वो फेलियर होते चला जा रहा था, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रहा मार्केट में। आगे देखिए। For Stimson's, this was a disaster. Rival executives in the other division sensed an opportunity in the failure. He heard whispers that some people were lobbying to kill Fabrice and get him resigned to Nikki Clark Hair Products, the consumer goods equivalent of Siberia. One of one of PN One of PNG divisional presidents called an emergency meeting and announced they had cut their losses on freeze before board members started asking questions. Stevens' boss stood up and made an impassionate deal. There is still a chance to turn everything around, he said. At the very least, let's ask the PhDs to figure out what's going on. PNG had a recently snapped up scientist from Stanford, Carnegie, Mellon, and elsewhere who were supposed experts in consumer philosophy. The division's presidents agreed to give the product a little more time. ओके, थोड़ा आराम से पढ़े, देखिए यहाँ फिलोसफी है, क्या है, साइकोलॉजी है, फिर यहाँ इम्पैशन्ड है, ठीक है, इम्पैशन प्ली मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है, फिर आगे पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। So a new group of researchers joined Stevens' team and started conducting more interviews. Their first inkling of why Fabrice was falling come when they visited a woman home outside Phoenix. They could smell here a 9 cats before they went inside. The house interior, however, was clean and organized. She was somewhat of a neat freak. The woman explained the vacuumed every day and did not like open her windows since the wind blew in dust. When Stevens and the scientists walked into her living room where the cats lived, the the scent was so overpowering that one of them ganged. What do you what do what what do you do about the cat smell? A scientist asked the woman. It's usually not a problem, she said. How often do you notice a smell? Oh, about once a month, the woman replied. The researchers looked at one another. Do you smell it now? A scientist asked. No, she said. ओके, यहाँ पे ये जो रिसर्चर को भेजा गया था ये पता करने के लिए कि फिब्रिस के फेलियर का रीजन क्या है, तो यहाँ पे उन लोगों को बेसिकली पता चला कि जिस वुमेन के पास 9 कैट है, ठीक है, और वो ऑलमोस्ट नीट फ्रीक है, मतलब बहुत साफ सुथरा वाली लेडी है, इवन वो साफ सफाई करने के बाद विंडो तक नहीं खोलती है कि उधर से धूल आ जाए, ठीक है, सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन जब ये लोग उनके रूम जैसे इंटर किए तो पता चला इतना बैड स्मेल था कि वो हार्डली ब्रीथ भी कर पा रहे थे, और उस वुमेन को स्मेल आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये चीज देखिए यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि कितना फ्रिक्वेंटली आप ये स्मेल आपको लगता है, तो क्या बताया गया, अबाउट वंस अ मंथ, ठीक है, तो यहाँ चीज फेलियर का रीजन यहाँ पे ये देखा गया कि जो जो स्मेल करते हैं, ठीक है, तो डेली सूंघते सूंघते एक तरीके से उनको आदत पड़ जाती है उस स्मेल की, तो उनके लिए वो खराब होता नहीं है, तो क्या होता है, फेब्रिज इसीलिए वो एक साइड चला गया, क्योंकि वो उसको डेली यूज में लोग नहीं लाने लगे, डेली उनको स्मेल नहीं लगने लगा, ठीक है, तो कभी वंस इन अ मंथ कोई स्मेल आता था
तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो ये था फेलियर का कारण जो रिसर्चर यहाँ पे इसीलिए इसको इस टेस्ट को थोड़ा ज्यादा इलॉबरेट करके बता रहे हैं। ठीक है, कि जब 9 कैट वाली लेडी को वो फेब्रेज इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो फिर वो किसको सेल करेंगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड नाउ। The same pattern played out in the dozen of other smelly homes the researchers visited. People could not detect most of the bad smell in their lives. In their lives. If you live with 9 cats, you become a desensitized. क्योंकि जब हम किसी के साथ रहेंगे वो बैड स्मेल से फिर हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं couldn't detect, वो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि बैड स्मेल है हमारे आसपास। डेली रहते रहते ऑलमोस्ट हम लोग को वो सेंस ही नहीं होता ये बैड स्मेल है। ओके, प्रोसीड। To their scent, if you smoke cigarettes, it's dangerous to your olfactory capacities so much that you can't smell smoke anymore. Scents are strange, even the strongest fade with constant exposure. That's why no one was using fabric stimulants. Realized the products cue the things that was supposed to the trigger daily use was hidden from the people who needed it most. Bad scents simply weren't noticed frequently enough to trigger a regular habit. As a result, fabric ended up in the back of the closet. The people with the greatest proclivity to use the spray never smelled the doors that should have reminded them the living room needed a split check. ओके, ये आप क्या पढ़े? Odors. आगे चलिए। Ma'am, what is the meaning of proclivity? किधर पढ़े? ये Ma'am, the people with the people with greatest the proclivity, हाँ, जो सबसे ज्यादा जिसको यूज करना चाहिए। ठीक है, द पर्सन विद ग्रेटेस्ट प्रोक्लेविटी, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है वही स्प्रे यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, द पीपल विद द ग्रेटेस्ट प्रोक्लेविटी टू यूज द स्प्रे नेवर स्मेल द ऑडर, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है वो स्प्रे यूज करने की, उनको स्मेल लगता ही नहीं है। ठीक है, अब कोई और, अच्छा ये पढ़ लीजिए, इसके बाद कोई और पढ़ेगा। रोहित यहाँ तक एक्सटेंशन ये पारा पढ़ लीजिए। अनम्यूट। Sorry, ma'am. Stevens' teams went back to the headquarters and gathered in the windowless conference room, rereading the transcript of the woman with a nice 9 cats. The psychologist asked what happens if you get a fired. Stevens put his head in his hands. If they could not fill fabrics to a woman with 9 cats, he wondered would he sell it too? How do you build a new habit when there's no cute trigger uses and when the consumers who most need it did not appreciate the reward? ओके, नेक्स्ट। यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक तो पता चल गया कि फेब्रिक्स क्यों फेलियर हो गया, रीजन डिटेक्ट हो गया। अब आगे देखिए क्या डिस्कशन हो रहा है। समर रोल 73, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। The laboratory. Ma'am, library, ma'am, I can't read. You can't read, why? मैम लाइब्रेरी में हूँ मैं, इसीलिए नहीं। लाइब्रेरी में? यस मैम। कॉलेज में आप? नो मैम। ओके देन त्रिशा। त्रिशा तो पहले ही पढ़ी है। पुष्कर, यू रीड। यस मैम। पुष्कर को पढ़ने दीजिए। ओके मैम। यस पुष्कर। The laboratory belongs to Wolfram Scuttle, a professor of neuroscience at the University of Cambridge is not a pretty place. His desk has been alternatively described by colleagues
As a black hole where तो आप documents कलिक are पढ़ेंगे, डिस्क्राइब्ड बाय कलिक्स, ठीक है, colleagues. Okay, ma'am. और इसको आप सूल्स पढ़ेंगे। श होता है क्या? बीच में जो है ना, ये श का प्रोनाउंस करेंगे सल्ज। ऑलराइट, चलो। Where documents are lost forever and pretty disks where organisms can grow undisturbed and in wild proliferation for years. Proliferation, wild proliferation for years. When मैम क्या बोली इसको नहीं समझ में आया। शर्क बोलिए ना, नाम है स्लूज, पढ़ सकते हैं आप, बस ये स्लूज। Sluice. हाँ, स्लूज नीड टू क्लीन Sluice. समथिंग विच इज अनकॉमन, ये कई बार नाम आएगा, ठीक है। Sluice. Sluice need to clean something which is uncommon. He does not use spray and cleanser. He wets a paper towel and wipe hard. If his clothes smell like smoke or cat hairs, he does not notice or care. However, समझ the में यहाँ experiment को देखा गया कि अगर मुझे कुछ साफ करना होगा तो हम जनरली स्प्रे यूज नहीं करेंगे, अगर डेली यूज अगर करना होगा तो बस अपना वेट टॉवल लेंगे, वाइप करेंगे, बस स्मेल इज गॉन, ठीक है। तो वो भी यही रिसर्च कर रहा था, आगे देखिए। However, the experiment that skulls has conducted over the past 20 years has revolutionized our understanding of how cues, rewards, and habits interact. He has explained why some cues and rewards have more power than others and has provided a scientific road map that explains why Pepsodent was a hit, how some diester and exercise buffs manage to change their habit so quickly, and in the end, what it took to make PUBG's smell in cell. cell. In the 1980s, Skulls was part of a group of scientists study in the brain of monkey as they learned to perform certain tasks such as pulling on lever or opening claps. Their goals was to figure out which yes ma'am Lever. lever. On lever. Okay. Their goal was to figure out which part of the brain were responsible for new actions. One day, I noticed this thing that is interesting to me. Skulls told me he was born in Germany and now when he speaks English sounds a bit like or Arnold Scavengers. मैम ये क्या है? मेरी अगेन नाम है शिवाजी निगर। Shivaji Nigar. If the Terminator were a member of the Royal Society, a few of the monkey which watched loved apple juice and other monkey. ma'am? Monkeys. Monkey नहीं होता है, monkey. Monkeys. Monkey, हाँ. O को pronounce नहीं, monkey. That's it. Monkeys. Which watched loved apple juice and other monkeys loved grapes juice. And so I began to wonder what is going on inside those little monkeys' heads. Why do different rewards affect the brain of in different ways? Skulls began a series of experiments to decipher how rewards work to neurochemical level. Technology progress he gained access in the 1990s to decide similar to those used by researcher at MIT
rather than rats. However, skulls were interested in monkeys. Like Jews and 8-pound monks with hazel eyes who had a very thin electrodes inserted into his brain that allows skulls to observe neural activity as it occurs. ओके One जैसे day चैप्टर skulls 1 में आप लोगों ने देखा था हैबिट लूप में कैसे रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब ये चीज यहाँ पे चैप्टर 2 में कि कैसे कोई नया हैबिट क्रिएट होता है वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है मंकी के ऊपर। ठीक है, जैसे वहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोड लगाया गया था रैट के दिमाग में, वैसे यहाँ पे लगाया गया है मंकी के दिमाग में। ठीक है, देखिए आगे ये कैसे One नया day हैबिट skulls मंकी ने क्रिएट किया। One day, Skulls positioned a jewel on a chair in a on a chair in a dimly lit room. lit room, हल्का लाइट and करके चेयर पे बैठाया गया जूलियो को। जूलियो इज द नेम ऑफ द मंकी एंड टर्न्ड ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। Julius' job was to touch a lever whenever colored shapes, small yellow sprills, and red squirrels, blue lines appeared on the screen. If Jules touch the lever when the shapes appear, a drop of blackberry juice would run down a tube hanging from the ceiling and onto the monkey's lips. Jules like blackberry juice. At first, Jules was only mildly interested in what was happening on the screen. He spent most of his time mildly interested, I am hardly interested in something, I am mildly interested in something। ठीक है, ये भी हम लोग डेली यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि ये सब गाना वगैरह सीखो, नहीं ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आई एम माइल्डली इंटरेस्टेड इन दीस थिंग। ठीक है, ये सब भी वर्ड है जो आप डेली यूज कर सकते हैं। He spent most of his time trying to squirm out of the chair, but once the first बैठना नहीं चाह रहा था, कूदा पानी कर रहा था। ठीक है, जैसे मंकी तो नॉर्मल आप बच्चे को भी ले लीजिए, बैठाइए, कहीं बैठना चाहेगा नहीं। सेम है मंकी को भी बैठा रहा है लेकिन वो बैठना नहीं चाह रहा है, कूद करके इधर उधर जा रहा है। फिर आगे देखिए। But once the first dose of juice arrived, Jules became very focused on the monitor. As the monkey came to understand through dozens of repetition that the shapes on the screen were a cue for a routine, touched the lever that resulted in reward blackberry juice. He started staring at the screen with a laser-like intensity. He did not squirm. When a yellow squirrel arrived, he went for a lever. When blue line flashed, he punched. And when the juice arrived, Jules would click his lips constantly. कंटेंटली देखिए, यहाँ पे आप कहाँ मिस्टेक किए, ये वर्ड लिख लीजिएगा, मंकी तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि दोबारा मिस्टेक ना हो, ये क्योंकि आपका हैबिट में बन गया ये मंकी बोलने का। लीवर तो आप अब सही बोलने लगे हैं। पाउंस्ड और कंटेंटली, ठीक है, ये पाउंस्ड पढ़ेंगे हम। व्हेन अ ब्लू लाइन फ्लैश, पहले क्या हुआ, मंकी बैठना नहीं चाह रहा था। ठीक है, जूलियो बैठना तक नहीं चाह रहा था। अब जैसे वो पहली बार लीवर टच किया, कौन सा शेप आने के बाद लीवर टच करना था, लीवर टच किया, वैसे ही ब्लूबेरी जूस उसके लिप पे गिरा। उसके बाद उसको फील हुआ कि हाँ ये हम कंटिन्यूस रिपीटेशन के बाद उसको पता चला कि हाँ ये काम हम करते हैं तो मुझे ब्लैकबेरी जूस मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्यों क्या है, फॉर अ रूटीन टच द लीवर। ये डेली अगर आप तुम करोगे टच द लीवर, देन रिजल्ट आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज ब्लैकबेरी जूस। तो नेक्स्ट टाइम जूलियो क्या हो गया, काफी फोकस रहा, लेजर लाइक इंटेंसिटी के साथ, मतलब काफी फोकस होकर के वो स्क्रीन देखना शुरू किया और वो उसी शेप का फिर वेट करना शुरू किया। ठीक है,
और जैसे मिला, जैसे ही when a yellow squirrel appeared, he went for the lever, and when blue line flashed, he pounced, मतलब कूद जाता था, अचानक खुशी वाला जंप जो होता है, ठीक है, he pounced, मतलब अचानक से कूद जाना खुशी से. And when juice arrived, Julio would lick his lip contentedly, मतलब satisfactorily या खुश होकर, satisfy होकर के वो लिप लिक करना, लिक किया. ओके. और ये है जो इलेक्ट्रोड जो लगा रहता है वो ब्रेन का इंटेंसिटी बताता है ना, जैसे रैट में इंटेंसिटी बता रहा था, ठीक है, कि कितना ज्यादा वाइब्रेशन हुआ था जब पहली बार वो टनल में भेजा गया था और सेकंड टाइम जब टनल में भेजा गया था. तो सेम वे यहाँ पे क्या इंटेंसिटी देखा, शेप ऑन द स्क्रीन, तो दिमाग इतना एक्टिव है. लीवर टच किया, जूस मिला, रिवॉर्ड जैसे मिला, तो तुरंत ये है सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है. लेकिन फिर आगे देखिए, जूलियो रिवॉर्ड रिस्पॉन्स व्हेन ही रिसीव द जूस, ये रिवॉर्ड रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड मिलने के बाद ये दिमाग उसका इतना एक्टिव हो गया, ठीक है, या समझिए इतना सेटिस्फाइड हो गया. आगे बढ़िए. As skulls monitored, और पढ़िए त्रिशा. Yes, ma'am. पढ़ लीजिए यहाँ से. As Church monitored the activity within Julio's brain, he saw a pattern emerge. Whenever Julio received his reward, his brain activity would spike in a manner that suggested he was experiencing happiness. A transcript of that neurological activity shows what it looks like when a monkey brain says, in essence, I got a reward. Church took Julio through the same experiment again and again, recording the neurological response each time. Whenever Julio received his juice, the I got a reward pattern appeared on the computer attached to the probe in the monkey's head, gradually from a अभी neurological मोंकी वाले हैं. Yes, हाँ, ma'am? अभी मोंकी वाले हैं. No, ma'am, monkey. हाँ. A neurological perspective, Julio's behavior became a habit. What was most interesting to Schultz, however, was how things changed as the experiment proceeded. As the became more and more practiced at the behavior, as the habit became stronger and stronger, Julius' brain began anticipating the blackberry juice. Schultz's probe started recording I got a reward pattern. Instead, Julius saw the shapes on the screen before the juice arrived. ओके. अब ये पैटर्न देखिए, पहले वाले पैटर्न में क्या देखे, जूस अराइव होने के बाद ये था लेवल, लेकिन अब क्या हो गया, जब ये रेगुलर प्रैक्टिस हो गया तो ये लीवर के शेप देखते के साथ उसका दिमाग एंटिसिपेट करने लगा कि अब तो रिवॉर्ड मिलेगा, है ना. तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी पहले जूस मिलने के बाद था, वो फ्रीक्वेंसी अब पहले ही मंकी एंटिसिपेट करने लगा. फाइन. ये जो क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के अलावा जो और फैक्टर, जो क्या नाम था वो एडवर्टाइजिंग मैन का, हॉपकिन, है ना. हॉपकिन एक और फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना, उसको ये प्रूव किया जा रहा है. फाइन, आगे बढ़िए. In other words, the shapes on the monitor had become a cue, not just for pulling a lever, but also for a pleasure response inside the monkey's brain. Julio started expecting his reward as soon as he saw the yellow spirals and red squiggles. Then Searles adjusted the experiment. Previously, Julio had received a juice as soon as he touches the lever. Now, sometimes the juice didn't arrive at all, even if Julio performed correctly. Or it would arrive after a slight delay, or it would be watered down until it was only a half as sweet. When the juice didn't arrive or was late or diluted, Julio would get angry and make unhappy noises or become moppy. And within the Julio's brain, Schultz watched a new pattern emerge, craving. When Julio anticipated juice but didn't receive it, a neurological pattern associated with desire and frustration erupted inside his skulls. When Julio saw with Q, he started anticipating a juice-fueled joy. But if the juice didn't arrive, that joy became a craving that, if unsatisfied, drove Julio to anger or depression. Researchers in other labs have found similar patterns.
Other monkeys were trained to intercept juice wherever they saw a shape on a screen. Then researchers tried to distract them. They opened the lab's door so the monkeys could go outside and play with their friends. They put food on in a corner so the monkeys could eat if they abandoned the experiment. abandoned the experiment, अगर छोड़ देता है Abandoned. experiment, abandoned. Yes. ओके, ये समझ में आया। वो जो फैक्टर जो अब क्या करना, एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन लोगों ने कि अब ब्लूबेरी जूस जो लीवर टच होने के बाद मिलता था वो अब रोक दिया गया। ठीक है, या तो लेट से मिलता था, कभी खराब टेस्ट का मिलता था, कभी मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद क्या था रिएक्शन, यहाँ पे दिया गया है कि फ्रस्ट्रेशन होता था, डिससैटिस्फाई, अनहैप्पी नॉइज निकालता था वो। तो ये क्या बताया गया कि किस चीज को ये इमर्ज किया, ये पैटर्न, एक नया पैटर्न देखने को मिला जिसको हम लोग कह रहे हैं क्रेविंग। Craving. ठीक है, Yeah. उसको हम लोग क्रेविंग का नाम दिया। तो वही चीज है कि किसी चीज का लत लगाना पड़ता है नए हैबिट को क्रिएट करने के लिए। और फिर कहाँ तक पढ़े, अबंडन द एक्सपेरिमेंट। Experiment. Yes, ma'am. रिद्धि अब आप पढ़िए। फॉर दोज मंकी Riddhi, we can't hear you. हेलो आवाज आ रही हाँ आ रही है। those who had not deployed a strong habit, the distraction they sat out their Ma'am, I think chairs. network issue है ma'am. हाँ, तो धर्मवीर आप पढ़िए। धर्मवीर रोल 31। Left the room. मेरी आवाज आ रही है? Room and never. हेलो रिद्धि मैं बोल रही हूँ आप रुक जाइए, आवाज ब्रेक हो रहा है। धर्मवीर पढ़ ले। For those monkey who had not developed a strong habit, the direction worked. ठीक से क्या है? The directions दोबारा। worked. Oh, distraction. Distractions work. Distraction worked. The slide out of Worked. their Worked नहीं, worked. Distraction worked. The slide out of their chairs, left the room, and never look back. They had not learned to crave judge. Crave the juice. Crave the juice. However, once a monkey had developed a habit, once its brain anticipated the reward, the distractions. 1 minute, ma'am. आपका भी प्रॉब्लम ही है। परविंदर पढ़िए। Those monkeys who had not developed a strong habit, the distraction worked. They slide out of their chairs. एक मिनट रुक जाइए। धर्मवीर आप घर पे प्रैक्टिस करिए थोड़ा, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत। No, मैम वो ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ने से जो थोड़ा अजीब लग रहा है। लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आपको ही पता है। ठीक है, तो आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करिए। चलिए परविंदर स्टार्ट। They slide out their chairs, left the room, and never looked back. परविंदर एक Yes. मिनट होल्ड ऑन। I think we had
टाइम वगैरह नहीं लग रहा मुझे कि अभी बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग फॉर दोज मंकी, यहाँ से आप लोग पेज नंबर 66 याद रखिएगा और यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले ओके हैं। मैम। तब तक अटेंडेंस दे दीजिए। आज लेकिन कैमरा सबका ऑन है, मतलब हार्डली कुछ बच्चे हैं जो कैमरा ऑफ रखे हैं। 11, 104, 17 तो आप कैमरा ऑन जरूर था, लेकिन विजिबिलिटी कुछ लाल पर्दा आप डाल दिए थे क्या कैमरा पे? तो कुछ बच्चे छोड़ के बाकी सबका तो अटेंडेंस बनेगा। ऐसे ही कैमरा ऑफ ऑन रखिए तो फिर मन भी लगता है पढ़ाने में भी। मैम मैम एक का कैमरा ऑन नहीं हो रहा। किसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा? चैट बॉक्स में 67 वाला नंबर। यहाँ से तो कोई सेटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, उधर नेटवर्क इशू होगा। सब चीज हो रहा है, कैमरा बस ऑन नहीं हो रहा। रवि शंकर रोल नंबर 67 है कौन? मैम अनामिका है। अनामिका है, रोल 67 मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, रवि शंकर मैसेज कर रहे हैं 21। ओके फाइन। चलिए रोल 1 14 है ना आज? 1 2 प्रेजेंट मैम 2। 2 कैमरा ऑन था आपका? यस मैम मेरा ऑन था। हाँ मेरा कैमरा ऑन था। 3 4 प्रेजेंट मैम। 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 8 9 10। प्रेजेंट मैम 10। एक सेकेंड, प्रियांशु सिंह का कैमरा ऑन नहीं था। आगे 7 10। 7 8 नहीं है, सीधा 10। 7 8 9 नहीं है, 10। ओके 11 का भी ऑन नहीं था। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 प्रेजेंट मैम। 21 22 23 24 25 26 Present, ma'am. 27 Present, ma'am. 28 29 Yes. 28 Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. 29. okay 30 Yes, ma'am. 30. 31 Yes, ma'am. 32 33 34 35 36 37 Present, 38 ma'am. 36. 37 38 Yes ma'am 38.
39, 40, 41, Present, ma'am. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, मैम 50 का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। 51, 52, 53. Present, ma'am. 52. Okay, 53, 54, 55, 55 ma'am. 56, 57, 58, 58. 59, 60, 61, 62, 63, मैम 62 प्रेजेंट। 63 ma'am. 64, 65, 66, 67, 68, 66 present. 66. Yes, ma'am. 66. Okay, 67, 68, 69. Ma'am, 67 भी present है. Okay, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 73 present, ma'am. Okay, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Yes, ma'am. 104. Okay, 104 का भी ऑफ ही था. 105, 106, 107, 108, 109. Done. Ma'am, 110. Ma'am, मैम 112. हमारे क्लास में 113 तक रोल नंबर है। 111. 101 कौन है? Sorry, 109 कौन है? 112. Ma'am, 110. का भी कैमरा ऑन नहीं था. 11. है कहाँ तक? बोलेंगे कैमरा ऑन नहीं हो रहा. हाँ? अरे वो बात नहीं ना है यार, ऊपर एक चावल है, सब्जी है, सब उसमें यहाँ पे. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, 112. मैम रोल नंबर 37। मैम बोले तो पर नेटवर्क इशू किससे आपके पास आवाज नहीं गया। 11 मेरा 111. मैम 111. 107 तक है. मैं बोल देती हूँ. सब लोग इकट्ठे मत बोलिए. 109, 110. यस मैम। 110 भी है. 111, Yes, ma'am. 112, Yes, ma'am. 111 कर. देखिए आप आज शाम तक हजारों का जुगाड़ कर दिए. 112. मैम रोल नंबर 37। एक मिनट रुक जाइए. 110, 11, 12 हो गया. 113 भी है. 114, 115. कहाँ तक है भाई यहाँ पे? मैम 113 तक। 113. 113 तक ही है ना. चलिए ठीक है. और कौन सा रोल नंबर? 37. 11 11 का तो ऑन नहीं था कैमरा. मैं पहले बोली मैम कैमरा ऑन था मेरा। मैं बोलती हूँ ना, थ्रू आउट द क्लास मैं लिखती हूँ. आई ऑब्जर्व यू ऑल. तो इसीलिए ये जबरदस्ती का आप ये नहीं कह सकते कि हाँ रखा हुआ था और झूठ मूठ का दुश्मनी तो है नहीं. चलिए थैंक यू. कैमरा ऑन रखिए. अटेंडेंस बनना शुरू. मैम रोल नंबर 37 मैम। अरे बन गया 37. इवन मैं ये तक बोल रही हूँ, अगर ऑन रखना शुरू करेंगे और अगर ये नहीं लगा तो मैं पहले का जो अटेंडेंस था, लाइक 101 बोल रहे हैं ना. एक्सक्यूज मी मैम. एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए. उन लोगों का भी मैं बना दूंगी जिनका कैमरा ऑफ करने की वजह से अटेंडेंस नहीं बना है. और अगर मैं देखी कि रेगुलर वो ऑन रखने लगे तो मैं पहले का भी बना दूंगी. ठीक है. मैम वेडनेसडे का मेरा छूट गया था. कब का? वेडनेसडे. वेडनेसडे रोल नंबर किधर किनका? 58. 8. हाँ. 58. ठीक है, मैं चेक कर लूंगी. ओके मैम. ठीक है. थैंक यू.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.